So hey guys, what is up everyone? Welcome back to our channel. Welcome back to another vlog of Showroom Lifestyle. We are back here at Code Detailing and आज जो है कोई भी डिटेलिंग मतलब सेरामिक पीपीएफ ये सब चीज़ें हम लोग नहीं दिखाएंगे, बहुत तगड़ा चीज़ दिखाएंगे जो कि एक पूरा बाइक का रिस्टोरेशन, क्योंकि हम लोगों का जो यामाहा RX 100 वाला वीडियो था उसमें बहुत सारा प्यार हम लोगों को मिला. सो वी हैव कोविद ओवर हियर. हेलो, कैसे हो? ऑल गुड. एंड RX 100 वाला वीडियो में कितना प्यार मिला, कितना सपोर्ट मिला? RX video came out nice. A lot of people inquired about RX. But as of now, I'm not doing RX because the paperwork is not happening. Only the restoration. मतलब मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि भाई पेपर वर्क हम लोग नहीं कर सकते. बाइक रिस्टोर कराना है, आपको इधर पे देके जाना पड़ेगा. बाइक बन के आपको लेके जाना पड़ेगा. Only the papers I'm not taking. हाँ, मतलब पेपर्स आपके ऊपर है. बाइक बनाना है, देख के छोड़ के चले जाओ, फिर लेके चले जाओ. बस ये चीज़ हम लोग करेंगे. इस बार से मैं बोल देता हूँ, पेपर के बारे में रिक्वेस्ट भी मत करना. पेपर वी आर नॉट डूइंग दैट. सो व्हाट वी हैव टुडे? Pulsar 200. कौन से ईयर का है ये? Year, this is the generation second. Okay. Second generation, because after that, this model got discontinued. So the respected customer, he doesn't want to give up the bike because he has an attachment with it. Just like so, that over there. Same, like everybody has like attachment with their vehicles. So he wants to get this one restored. Restored means as in like everything has to be like factory condition. Factory मतलब एकदम brand new showroom से जो बाइक आएगा. There is like no compromise on like single parts. Like every each and nut bolts needs to be changed. That's how restoration happens. Okay. Like, it is not like some parts which is like still okay, we can just skip it. No. Each and every nut bolt needs to be changed because restoration means like it has to be like a showroom condition. So the tanks, there is no repainting of the tank. The whole tank will be changed. Obviously there is a welding fault here. The customer got it welded, so the oil is leaking. So it has some scratches here. This will be changed. Only the thing which is not changing is the exhaust. Okay. Because the condition of the exhaust is still okay. The shockers will be changed, these lug nuts will be changed, the handlebars will be like black because the customer wants like everything to be in black. Black, okay. White used to come like this, these doesn't used to come like in black, used to be in like aluminium finish. So it has to be black, this will be also black, the master cylinder is gone, like it became like a clutch. So everything has to be changed. You have the fork which has like got lines. Okay. So the oil seal will be breaking every time you change the oil seal. So these pipes will be changed. The calipers needs to be changed. You have lines here, so the disc patch needs to be changed. So it's like everything. Everything. Engine भी rebuild होगा इसका. Engine will also be fully built. All the pistons, all the rings inside, camshaft, all the things will be changed. The engine will be repainted also. Only these portions are not changing because it's like still in brand new condition. Okay. Only those portions will be painted. Oh, yeah. The number plates will be new. Okay. Everything lights and all, indicators and all, will be new. foot pegs and all. ये टैंक पूरा नया बन जाएगा and everything, mirror सब कुछ जो है. It has to be like the way you are going to buy from the shop. आज पूरा का पूरा बाइक जो है खुल जाएगा. Yeah, today we'll go for the body shops. A few parts will be ordered. इसका चैसी भी पेंट होगा. The chassis will be painted because you have like rusting here. हाँ, obviously ये तो होता ही है भाई. Rustings. So obviously these need to go. When everything is like open, so we can give a fresh coat on the chassis. Right. So if needed, we can strengthen the chassis a little bit more. But depends. Like the leg guard is like pretty good condition, so we can paint the leg guard. Yeah. It's saving up like little bit so the customer can afford the whole build in such a way. And obviously in restoration there is no time limit because we have to source a lot of genuine parts, which takes a lot of time. Can be like 15 days, can be like 20 days, can be a month, depending on which bike we are restoring. Most probably this bike will be done like within 20-25 days. If it's like an RX or something, it takes more days. Obviously sourcing those parts are very difficult. Very difficult. Exactly. सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो को लास्ट तक देखना एंड एंड में बाइक का जो पूरा रिजल्ट है हम लोग प्रॉपर दिखाएंगे एंड इन बिटवीन दैट यू गाइज गोना वॉच कि क्या क्या बाइक में हो रहा है. दिस इज द कंडीशन ऑफ द बाइक. जस्ट चेक आउट कैसा है. Of the lost beast, he's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't
right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. So guys, finally after 20-25 days we are back here at Kode, and the bike, the Pulsar 180 is done. So Kolkata कितना दिन लगा and क्या क्या प्रोसेस था? 28 days. After installation, 28 days. Everything got changed. Nothing. Like the alloys, the exhaust, these are like good. The rest, everything is like new. There is no repair work. It's like completely changed. All new parts. All new parts. New, brand new engine by the way. And 0 kilometers on the engine. 0 kilometers. एक बार पहले भाई स्टार्ट करते हैं. हाँ. तो भाई पहले से बता देते हैं क्या क्या चेंजेस होगा सीधा. So alloys got painted. Brakes में क्या हुआ? Master cylinder is new. Master cylinder is new. Levers are all new. भाई ये पूरा जो टैंक है एकदम ब्रांड न्यू है. लोगोज आर न्यू. अभी तक इसमें चिपका हुआ है क्योंकि लोगो सेट करना है अभी. एंड इधर पे देखो पूरा इंजन पेंट हुआ है. इंजन गॉट पेंटेड प्रॉपरली. ये साइड के सारे पार्ट्स ये ब्रांड न्यू है. ठीक है. सीट ब्रांड न्यू ना. तो ये कवर सीट कवर्स गॉट ब्रांड न्यू कवर्स. ये पुराने हैं लेकिन पेंट किया हुआ है पूरा ये वाला पार्ट पूरा पेंटेड है. ये नया है. ये मतलब এটা নতুন, এগুলো সব নতুন. টেল লাইট নতুন, ब्रांड न्यू टेल लाइट्स, टेल लाइट, ब्रांड न्यू रियर का फेंडर्स. जस्ट चेक दिस आउट. जो था आप लोगों ने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में देखा. ये भाई क्या था? साड़ी गार्ड न्यू तो पेंट हुआ है लेकिन ब्रांड न्यू लग रहा है भाई. ये शॉकर्स गॉट पेंटेड टू ब्लैक. ये वाले पार्ट्स सब कुछ. एंड अगर स्टैंड दिखाओ, स्टैंड भी सारे कुछ पेंट किया गया है. न्यू एवरीथिंग. न्यू वायरिंग हार्नेस. New wiring harness. All the wirings are new. Floater is new. अच्छा, टैंक का फ्लोटर इज न्यू. ओके. देन क्लच इज न्यू. Full clutch housing, full set. Clutch set is new. Master cylinder is new. चेन स्प्रॉकेट इज न्यू. चेन देखो भाई एकदम ब्रांड न्यू चेन स्प्रॉकेट लगा हुआ है. एंड सामने का पूरा जो फेस है वो ब्रांड न्यू. ठीक है. सामने का मडगट जो है पूरा ब्रांड न्यू. एंड एवरीथिंग इज चेंज. These are also new. Okay. So this bike is 2007 एंड अभी लग रहा है पूरा ब्रांड न्यू जो है शोरूम से निकला हुआ है बाइक. सिर्फ ये एग्जॉस्ट जो है पुराना वाला लगा हुआ है. एंड दीज पार्ट्स क्योंकि ये वाले पार्ट नए नहीं मिलते. एंड द बाइक इज़ फुल फ्रेश 0 किलोमीटर जस्ट लाइक शोरूम. सो व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस? क्या क्या सीखा है इससे? You see, these are like pretty cult bikes. It's a Pulsar 200. So few parts are not available like this.
is available only in the 150s. हाँ The 150, the air duct is not there because it's like liquid cooled. ओके I mean oil cooled. या Liquid cooled is like coolant and all, but this regulates with the mogul only. With the engine oil, it gets regulates through the chamber which is there inside. या So different system. That's why the badge of 200 is not available as of now. Can't put like stickers because the bike used to come with like the gel 200 logo. badges, yeah. So it has to be like authentic, else we won't put it. सो जस्ट चेक द बाइक आउट मैन, इट्स ब्रांड न्यू, जितना दिखा उतना कम है. एंड ब्रेक्स आर ऑल न्यू, क्लच न्यू, सब कुछ न्यू. मतलब भाई अभी बाइक और बहुत चलेगा. Now, like easily for 4 years, there is just regular maintenance. जस्ट Just like a normal motor. That's it. भाई साहब क्या ही काम हो गया हो चुका है. अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आ गया इस रेस्टोरेंट में? Around total came around 55,000, including everything, all the parts, the paint job, द इंजन रिबिल्ड, the labor cost, including everything, it's around almost around 50. ऑलमोस्ट अराउंड 55,000 राइट. सो कोई भी अगर बाइक्स रिस्टोर करना चाहे, सो व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड लोकेशन? 9073274255. लोकेशन Location just opposite to God Town near Lodge Crossing. तो भाई RX के बाद ये वाला बाइक पूरा का पूरा कोविदा ने रिस्टोर किया है. RX तो बहुत सारे रिस्टोर किया है आपने. Yeah, like now the thing is like RX, again the parts availability became an issue. Everybody wants papers. We Yeah. are not doing papers. हाँ पेपर नहीं होगा भाई, पेपर हम लोगों से एक्सपेक्ट भी मत करना. आप बाइक लेके जाओ, बाइक लेके जाओ एंड वी विल डू एवरीथिंग एक्सेप्ट द पेपर्स. ठीक है. सो अब किसी का भी अगर कोई भी बाइक है, सो कोविदा कैन डू दैट फॉर यू. कोई भी बाइक रिस्टोर करा लो एंड उस बाइक में अभी PPF हो रहा है एंड कोविदा डज ऑल द डिटेलिंग जॉब्स ऑन अर्थ. सो मेरे सारी गाड़ियों का पेंट करेक्शन एंड ऑल कोविदा सेरामिक भी करते हैं, PPF भी करते हैं, जैसे कि उस बाइक में भी हो रहा है. कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था ऑडी 8 में भी PPF हुआ. सो you can trust Kode on any kind of dealing services, or if you wanna restore your bike, you can definitely contact him. So if you guys enjoyed today's video कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता देना. बाइक कैसा लगा, पहले कैसा था एंड अभी कैसा है, लाइक हेल एंड हेवन डिफरेंस. सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो कोड डिटेलिंग ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. मेरे को भी कर देना @invalid.username404. As always, I'm at the end of today's video. I look forward to seeing you next video real soon. Bye bye. Quick, you left scars ripped to be chewed up and discarded.